Water is quintessential for life to exist. We all know that. We use it for cleaning, washing, cooking, energy generation, and drinking. Rivers, ponds, lakes are a few of the sources of fresh water. Of these, rivers are the prime source of fresh water. Rivers have been the foundation of human civilization. The very initial settlements were based near river plains because they made conditions conducive for agriculture. We see various examples from history books. The Mesopotamian civilization around the Tigris-Euphrates river system, the Egyptian civilization around the Nile River, the Indus Valley civilization around the Indus, and civilizations around the Yangtze and Yellow rivers in China, and many more. Over 85% of India's population depends on rivers for consumption. The northern plains of India are one of the most fertile lands in the world because of the alluvial soil that is found in the region. This highly fertile alluvial soil is present here because of the rivers that flow here. This has its own implications even today, as this remains one of the most densely populated areas in the world with a population of over 40 crore. The dependence on river water is massive. But what if these rivers were to become poisonous to the point that the water is unfit for consumption? What if these rivers died? What will happen to the people whose lives depend on that river? And what will happen to the life thriving within the river? To help you understand better and see real life implications of the death of a river, I bring to you a story of one of the holy rivers of India, a river which has been neglected by both common citizens and the authorities for way too long. This negligence has already had devastating consequences. However, these consequences are only a miniature of what stands ahead of us. The Yamuna River, also known as Jamna or Kalindi, is a tributary of the river Ganga, the longest tributary of the river Ganga. It originates at Yamunotri from the Bandarpunch Massif and stretches up to 1376 kilometers while flowing through Bagpat, Firozabad, Mathura and Agra up to Prayagraj, where it merges with the river Ganga at the Triveni Sangam. Today, the Yamuna in Agra and surrounding regions faces an existential crisis. The problems that cause this are many. The complete ecosystem of Yamuna at Agra is dead. The river that was once home to turtles, mugger crocodiles, even freshwater Gangetic dolphins, and various kinds of fish, today has zero aquatic life in the region. To understand the problems better and in more detail, we will go through the evidences we gathered from our field research and facts that we collected from various sources, both online and on ground. We also followed one of the prominent local activists
working on Yamuna, Dr. Devashish Bhattacharya, who is an ENT surgeon by profession and works for the Yamuna. He conducts several occasion-based programs on the Yamuna to spread awareness and urge people to make a conscious effort to save the Yamuna. He performs the Yamuna Aarti by the banks of Yamuna every evening. The Yamuna is a sacred river, and as per Dr. Bhattacharya, people do not pollute what they worship. Therefore, through this act, Dr. Bhattacharya wants the public to acknowledge the importance of the river as a sacred entity, as a life giver, and work towards bringing it back to life. यमुना नदी प्राचीन पौराणिक नदी है, कृष्ण की प्रिय पटरानी है। यमुना नदी को हम पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। मथुरा वृंदावन यमुना किनारे ही बसा हुआ एक बहुत बड़ा तीर्थ नगरी है और बहुत पावन नदी रही है। इसकी यम की बहन सूर्य की पुत्री यमुना के बारे में चर्चा ये है कि जो इसके जल से नहा लेता है वो मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है, या उसकी मृत्यु समय से पहले नहीं होती है या समय नहीं होती है। तो यमुना की बहुत महत्ता है, यमुना की बहुत पूजन है। और ब्रज का निवासी तो यमुना का भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। जो यमुना दिल्ली से पहले बागपत बड़ौद तक भी बहुत साफ़ पानी आता है, उसमें बहुत साफ़ पानी आता है। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वो पानी प्रदूषित हो जाता है और वो इटावा तक प्रदूषित रहता है। तो दिल्ली टू इटावा अगर यमुना का फ्लो देखें हम एरिया डिस्टेंस, तो लगभग 250 किलोमीटर का एरिया बैठता है, 250 पौने 300 किलोमीटर का। ये बेल्ट में यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बाकी तो ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो दिल्ली में होता है, 80% पोल्यूशन दिल्ली में होता है, जबकि इट इज़ ओनली 2% ऑफ द स्ट्रेच ऑफ यमुना। Only 22 kilometers out of 1378 kilometers flows in Delhi, but highest pollution is created in Yamuna at Delhi. उसके बाद भी जैसे जैसे शहरों में आती जाती है वो यमुना प्रदूषित होती जाती है। और आगरा की बात करें तो आगरा में भी बहुत पोल्यूशन है यमुना में, no doubt about that. Now, let us delve into the depths of issues that have led to Yamuna's death and continue to degrade whatever is left of the river. The first problem here is that the Yamuna, like other natural relief features of the earth, is facing the brunt of climate change. And above that, the exorbitant number of dams and unsustainable management of the flow of the river's water create a disastrous impact on the river's ecosystem and on those who depend on it for livelihood. The following barrages fall before Yamuna enters Agra and keep the water from flowing in so much as the least necessary volume. Due to this, the river has shrunk dangerously. The only flow in the river is contributed by the polluted water coming in from drains for most part of the year. Dry Yamuna's riverbed is not only visible but is also quite welcoming for playing cricket, washing clothes of thousands of people, walking, grazing cattle, and a few other daily activities like defecation. And well, capturing people do these activities added to the list. जो सबसे बड़ा डैम है हरियाणा में हथनी कुंड में, वो पानी को रोक लेता है और वहाँ से काफ़ी कम मात्रा में पानी दिल्ली को रिलीज़ किया जाता है। अगर वो दिल्ली को भी रिलीज़ पानी होता है जितना, उसमें से भी काफ़ी हद तक पानी दिल्ली रोक लेता है ओखला बैराज पर, और उससे पानी जो है बहुत कम मात्रा में आगे रिलीज़ होता है। और जो रहा सहा पानी आता है वो हमारे गोकुल बैराज में रुक जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि डैम्स और बैराज बहुत हैं जिसकी वजह से यमुना में पानी बहुत कम है। पहले एग्रीमेंट के मुताबिक मिनिमम फ्लो ऑफ यमुना शुड हैव बीन
10 क्यूसेक्स ऑफ वाटर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अभी 10 क्यूसेक पानी तो दिल्ली छोड़ता ही नहीं है कभी किसी समय, तो यहाँ आगरा में 10 क्यूसेक पानी आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या। अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट, मिनिमम 65 क्यूसेक्स ऑफ वाटर शुड बी देयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब तो 65 क्यूसेक्स तो छोड़ो, 5 क्यूसेक पानी भी एक बार में यमुना में नहीं होता है। तो ये डैम्स और बैराज की समस्या बहुत बड़ी है कि इनसे सारा पानी रुक जाता है और आगरा को पानी बिल्कुल नहीं मिलता। आगरा में तो जो पानी है वो नालों का ही पानी है बस। Even after all this, the authorities simply don't seem to understand. On the 18th of August 2022, the government of Haryana gave a nod for constructing yet another dam on the Yamuna in Yamunanagar district. सबसे बड़ी मुख्य समस्या आगरा में ये है कि आगरा में नाले जो हैं सीधे यमुना में गिरते हैं, उनको टैप नहीं किया जाता, उनका पानी शोधित नहीं किया जाता, वो पानी ट्रीट नहीं होता है, डायरेक्ट गंदगी, प्लास्टिक, चमड़ा, कचरा, पेठे का कचरा, चूने का पानी सब यमुना में जाता है। इन नालों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने कई बार आरटीआई डाल के पता किया कि नाले कितने हैं, तो नगर निगम ने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि 61 नाले अभी भी यमुना में डायरेक्टली गिरते हैं, जबकि हमारे हिसाब से तो मोस्टली सभी नाले डायरेक्टली गिरते हैं। एक आध एसटीपी ऐसी है जो प्रॉपरली काम करती है, वरना कोई एसटीपी काम ढंग से करती नहीं। Over 400 nalas, big and small, bring wastes from all over the city and dump all of it into the river, or rather what remains of it. Yamuna, in fact, for most of the year is merely these nalas because it has no water of its own. And this toxic water is then consumed by the beings dependent on it. Even after efforts of several people and hefty investments by the government, there seems to be no improvement. Here, you see a graph based on National Geographic's report in 2014, which shows that the oxygen level of Yamuna's water at Agra is a staggering total of 0. हमने बचपन से यमुना को देखा, यहाँ पे तैराकी का मेला होता था, यहाँ पे इतने पूरा पानी भरा रहता था, हमने उसको देखा, यहाँ पे आते थे हम लोग बचपन से यहाँ पे यमुना में। अब यमुना की हालत देख के मैं बहुत दुख होता है, रोना आता है यमुना की हालत देख के। यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, कुछ विकास नहीं हो रहा यमुना का जी का, कोई ध्यान नहीं रहा। बहुत गुस्सा आता है हमें इसको देख के, हमारी भावनाएं बहुत आहत हो रही है उससे। यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, ना कुछ सोच रहे हैं, ना वो आते हैं कभी यहाँ पे। This gives rise to the next big issue, that is contamination of water. This is the third problem. Little flow plus heavy pollution equals breathtakingly enormous toxicity. A river's flow is what keeps it alive. If it stops to flow, it starts to die. The river is basically inhabitable for the aquatic species that once thrived in the river and contributed to its importance in the ecosphere. Barely any aquatic life exists in at least the region covered in this project. This graph shows the high amount of zinc in Yamuna at Agra. And this table shows the health of rivers flowing through Haryana, where blue represents the healthy rivers, yellow the alarming dying state, and red signifies that the river is nearing extinction and that the water is unfit for consumption. Many are dependent on Yamuna for drinking water, even if it is unfiltered. When exposed to this water, people suffer from diseases. In a 2019 video report, The Guardian covered Yamuna and its impacts on people. And they are not able to move, not able to walk properly. And do the villagers know that the water they're drinking? Yeah, they know, but there is no other option to live.
If they have to survive, then they will have to drink this water. सन 2012 थे तो बिल्कुल कम गयो ही ना आए ना काम हो ना बैठा उठे कछु नहीं तो दिनों से जाई पे टट्टी करे वो जो कछु करती जे करते टट्टी पेशाब जो कछु करो ते जाने करो अब जे है जाके संग जो सहारे थे जो करेगा डोलिया तो डोलिया का है और जो समझ लो जे मर गई तो फिर हमारा इल्लो खराब हुआ फिर ना है पानी साहब बजाते आ वो तो नला फला कोई पी लेता है वो तो हाँ डॉक्टर ने कहे कि जो पानी चेंज कर दे और बस एक एक लीटर की बोतल आ देगा भाई पियो इतने का दाम थोड़ा कहाँ दर है तो भाई ला के पियो 1 बीघा खेत तो जाई में बिको अब जे है कि दवाई चल रही है तो चल रही है फिर तो फांसी लगाना नहीं पड़ेगा ठेला मोटरनी के नीचे कटना पड़ेगा. Moreover, these problems render Yamuna-based agriculture impossible. As you see in the picture, this graph shows the level of contaminants present in the river Yamuna. Yamuna at Agra has the highest amount of chemical contaminants. धोबी घाट और केमिकल वेस्ट, दिल्ली में भी धोबी घाट बहुत है, बहुत बड़ा धोबी घाट है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा धोबी घाट है. जो धोबी घाट से जो है डिटर्जेंट और जो सोप इस्तेमाल होता है उसकी वजह से झाग आप जो यमुना में देखते हैं वो झाग पैदा होता है. और इसके साथ साथ ये लोग केमिकल डाइज वगैरह भी यूज़ करते हैं कपड़ों को रंगने के लिए, पोतन के लिए, जिसकी वजह से सारा वेस्ट वो जो है वो यमुना में बहता है और पानी टॉक्सिक हो जाता है. इस टॉक्सिक पानी की वजह से एक्वेटिक लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यमुना में एक्वेटिक लाइफ नाम की चीज़ नहीं रही है. The industrial waste from leather factories and plastics have clogged the riverbed, and therefore the already low volume of water is unable to seep inside the riverbed, making groundwater recharge nearly impossible. This is indeed an issue because of the high dependence on groundwater for livelihood. Even the groundwater has become toxic. And as reported by the Jal Nigam, 7 lakh liters of groundwater is being extracted on a daily basis for consumption in Agra only. और सबसे बड़ी समस्या है एक प्लास्टिक और लेदर की जो कटिंग्स होती हैं उसकी, चमड़े की कतरन और प्लास्टिक नालों से बह के सीधे यमुना में जाती है और वो यमुना को बहुत हाईली पोल्यूटेड कर दिया है. और पोल्यूशन के साथ साथ वो नीचे सिल्ट के रूप में जमा हो गई है, तो जो पोरोसिटी ऑफ द सॉइल थी वो ख़त्म हो गई है. तो यमुना का जो पानी है वो वाटर रिचार्ज नहीं कर पाता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर पाता है. तो एक तो पानी का लेवल कम हो गया है, ऊपर से पानी जो भी ग्राउंड वाटर में जाना चाहिए वो ग्राउंड वाटर में न जाके वो बह के चला जाता है पूरा. और प्लस अपने साथ केमिकल वेस्ट, चमड़े का वेस्ट, प्लास्टिक का वेस्ट सब लेके जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. तो अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है तो फिर सॉइल का भी डिग्रेडेशन होता है, सॉइल की भी कंडीशन ख़राब होती है और एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ता है. पहले हम बचपन में देखते थे यमुना किनारे तरबूज की और पेठे की बहुत खेती होती थी और रेत ही रेत थी वहाँ पर, खूब रेत. अब वो रेत का तो हो गया है सब खनन, सब रेत तो चली गई है. पता नहीं वो क्या चमड़े का और प्लास्टिक का जो वो मिक्सचर है उसका वो मिट्टी के ऊपर बन गया है कुछ प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. वरना इतने स्वादिष्ट और मीठे तरबूज हमने खाए हैं बचपन में कि आपको कह नहीं सकते हैं. आज एक भी यमुना किनारे रेत ही नहीं है, यमुना किनारे सॉइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे तरबूज या पेठा उग जाए. हम जब बचपन में थे तो यहाँ पर साइड से बहती थी यमुना, बिल्कुल शुद्ध पानी रहता. और औरतें जब आती तो टटिया लगा देते थे और पानी खूब रहता था. वो टटिया लगा के कहीं भाई बहन आ जाए, इतना पानी रहता था. हम खूब नहाते थे, बच्चे भी खूब नहाते, हम बच्चे ही थे जब नहाते थे. और इतना पानी शुद्ध था, पीते थे और कुछ भी नहीं था. और कछुए वगैरह बहुत होते थे, दाना डालते थे हम. और आज जो है ना कछुए ना वो रेती है, रेती एकदम चमकदार होती थी, तबीयत खुद होती थी. पानी बिल्कुल फिल्टर दिया था उसका पानी और पीने में स्वादिष्ट. आज जो है
नहाने तक को मिल गया। अब की दशहरा हुआ उस समय कोई आया ही नहीं नहाने नहीं आया कोई, नहाने की भी इच्छा नहीं है। पानी देखो तो गंदा नाले का पानी है। अब बीमारी का घर है ये तो, जब पानी पीने योग्य है नहीं, नहाने योग्य है नहीं, तो आदमी काहे को नहाएगा, ये परेशानी। And the fifth problem is that the Taj Mahal, which is one of the 7 wonders of the world, is situated at the bank of Yamuna in Agra. Crores of tourists from both around the country and the world visit the monument each year. Imagine the harm being done to the reputation and heritage of the monument and the country because of Yamuna's filthy condition. And that is not even the worst part about it. The bigger concern is the danger that the death of Yamuna poses to the structure of the Taj Mahal itself. Every now and then, we hear that Taj Mahal's marble is getting discolored or losing its sheen. This is simple chemistry at work. The harmful hydrogen sulfide that is released from Yamuna's toxic and contaminated water has had corrosive effects on the Taj Mahal's marbles. Shockingly, the impact of this gas is even more harmful than the sulfur dioxide or the smoke released from industries in the Agra district, which is generally considered the villain in the monument's deterioration story. Another point to note is that the Taj Mahal's base structure is made of wood, placed underground. The wood needs to remain moist in order to stay strong and provide stability to the structure. The job of keeping it moist was done by the river Yamuna itself. Hence the choice of Taj Mahal's location. If Yamuna stops flowing, there would be no water to provide moisture to the base, and if that happens, we will lose one of the most iconic structures of the world, and one that is a significant part of India's heritage and tourism. एक अभियान शुरू करा गया रिवर कनेक्ट कैंपिंग 2015 से, जिसमें आरती के माध्यम से लोगों को नदी से जोड़ना, नदी की दुर्दशा को रूबरू कराना, ये मकसद इस आरती का, इस अभियान का था। वरना आरती आपने देखा होगा कहीं पर भी मंदिर महंतों के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति के, हर समुदाय के आए हुए व्यक्तियों से यमुना की आरती कराई जाती है और यमुना का एक संकल्प दिलाया जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शर्म आदमी के अंदर होगी तो आरती करने के बाद अपनी माँ पे गंदगी करने वो यमुना किनारे नहीं आएगा। हम लोग काफ़ी समय से यमुना आरती का आयोजन कर रहे हैं, लगभग 7.5 सालों से। तो यमुना आरती एक तरह से एक मिशन है लोगों को जोड़ने का यमुना से, उनको यमुना के प्रति जागरूक करने का, उनको यमुना की पूजा कराने का, जिससे कि वो जब पूजा करें तो किसी चीज़ की पूजा करने पर आदमी उस चीज़ को गंदा नहीं करता है, उसको नष्ट नहीं करता है, उसको ख़राब नहीं करता है। तो ये एक भावना जगाने के लिए हम लोग यमुना आरती का आयोजन करते हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें यमुना आरती से और यमुना को जुड़ने के बाद प्रण करें, संकल्प लें कि वो यमुना को आगे कभी गंदा नहीं करेंगे, कभी कोई गंदगी वाली चीज़ यमुना में नहीं डालेंगे और यमुना को स्वच्छ रखने में अपनी सहायता करेंगे, ताकि जो प्रभु की इच्छा, जो भगवान कृष्ण की इच्छा वही होगी। ठीक है। Yamuna is only one of the victims of human exploitation. It will be no surprise if we get to hear this happening to other rivers as well. This path is not just treacherous but straight up fatal. We have only brought to you the ground realities which somehow no one cares to observe. But it is still not too late. We have a chance to make a difference for the better, for you, for me, and for all beings and our planet. Through Rivers of Life, we want to send out a message
not only to the government, administration, and concerned authorities, but to each individual living on the planet. We live as long as our rivers do, for rivers bring life.